Hello students, a very good morning to you. How are you? I hope you are okay and doing your work properly. But all my dear students, except section A, B and some students of section G are sending their homework, then no one will try to sending their homework. So it's my request again to you, please send more and more homework and also make some small videos related to any topic that can be you do better, that must be 2 to 3 minutes that video. So you make the videos of yourself and then send it to me. This will be your representation. And as you know that we are continuing our study through online, so we try to make you more confident on yourself. That's why there are our efforts that you should fulfill our efforts and do your efforts. Clear students? So now let's continue and move to our topic, that is chapter 8 of class 10th, how do organisms reproduce. In our last class we have already discussed about the different changes that seen in both male and female during puberty. Means before reproduction an organism gets mature itself. Means the phase through which an organism passes before reproduction is called as juvenile phase, and after juvenile phase I have told you about puberty, in which we saw the physical maturation of the body both in male and female, and we already discussed what are the changes. Today we will discuss about the human male reproductive system. Means we should know about the different parts of human reproductive system and what is the function of these parts. This is the most important topic, dear students, and every year this question will come as 5-mark question. So you should only remember the function of different parts. Nothing to be understand more in detail in this topic. So you just try to remember the different functions. So now let's see what is a male reproductive system consists of. You can see the diagram here. I have already drawn this on the blackboard. And this diagram represents the human male reproductive system. And the human male reproductive system is consists of a pair of testes, an external genitalia that is called as penis, urethra, urethral meatus, then bladder, seminal vesicle, prostate gland, vas deferens, etc., etc., etc. So now let's understand the function of different parts. As we know, the male gametes form. Sperm that is formed in the testes. So first we have to know where its testes located. Testes, let's write the different parts of the human reproductive system, means human male reproductive system. So we can say a pair of testes, then a penis, then urethra, then seminal vesicle, then prostate gland, then vas deferens, ureter, scrotum. So these are the different parts of the human male reproductive system. There are so many other parts also, but for your class, means for only 10th class, only you should study about these organs. When we will go to higher classes, then we will study more about human male reproductive system. But for class 10th, you have to remember only the functions of these parts. So first, let's see where the first organ, that is testis, is located. Testis is the male sex organ and this is located
just below the lower abdominal region and outside the body. It means the abdomen, or which is called your belly, the lower abdomen has a pair of structure that is called as testis, and inside the testis the male gamete, which is called as sperm, is formed, and that testis needs lower temperature than the normal body temperature. As we know, our normal body temperature is 37 degrees Celsius, but the testis requires 35 degree Celsius. Why this? Because for the formation of sperm, the testis needs a lower temperature than the normal body temperature, and that temperature is up to 2 to 3 degree less than the normal body temperature. So here one question can be formed, that why the testis needs lower temperature than the normal body temperature? Because for the process of spermatogenesis it needs low temperature. If the temperature will increase, then the process of formation of sperm will be inhibited. That's the reason. So next, as I have told you, this is the testis. You can see the diagram. This is the testis. The testis is covered by a thin pouched skin structure. A skin pouch like your bag that covers the testis, and that scrotum helps in maintaining the lower temperature than the normal body temperature. So what is scrotum? Scrotum is a skinned pouch which covers the testis, and it gives or it maintains the lower temperature than the normal body temperature in the testis. So this is the function of scrotum. Next is penis. Penis is called as the external genitalia which participate during the process of sexual reproduction in human beings. Then urethra. Urethra is the duct or the tube through which the male gamete sperm is released from the body. Through urethra, the male gamete released from the body. Then seminal vesicle. Seminal vesicle and prostate gland plays an important role in male reproductive system. So seminal vesicle secretes seminal plasma. Remember, seminal vesicle secretes seminal plasma, and this is rich in fructose and calcium. Fructose and calcium, which provides nutrition to the sperm. As you know, after formation of sperm, it needs nutrition for its survival, and that nutrition is given by the seminal vesicle. So seminal vesicle secretes seminal plasma which contains fructose and calcium. So what is the function of fructose and calcium? It gives nutrition. It gives nutrition to the sperm. It gives nutrition to the sperm. Again, prostate gland. What is the function of prostate gland? There is prostate gland, you can see. This is seminal vesicle. Here the structure is seminal vesicle, and here this structure is prostate gland. Like seminal vesicle provides nutrition to the sperm, but the secretion of prostate gland gives a liquid medium to the easy movement of the sperm. So remember the function. Seminal vesicle provides nutrition. Prostate gland provides liquid medium. Prostate gland provides liquid medium to the sperm for its easy movement from the testis towards the urethra. Clear, students? Next is your vas deferens. Vas deferens, you can see here, this part, this tube which is come from testis, this is vas deferens. And vas deferens carries the sperm from testis towards the urethra. Vas deferens carries sperms from testis towards urethra. So this is vas deferens, and this is the function of vas deferens. Next one is ureter. As you know,
when we are studying about kidney, then ureter, the function of ureter is to carry urine. So here why we are studying about ureter if it carries urine? Remember students, in case of human males, there is a common passage formed between, that is consist of ureter and the vas deferens. So in case of males, the male genital organ is also called as urogenital tract. It means through a common passage both sperm and urine is released in case of male. So here ureter carries urine and it is connected through the urethra, which carries both urine and sperm through penis. Next is your scrotum, which already I have explained to you. Clear? And here you can see this is called as urethral meatus. Urethral meatus is the small hole that present in the on the tip of the penis, through which urine and sperm is released. So they are the different functions of human male reproductive system. and again repeating it. बेटा ये ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है. आपको इसके अंदर क्या याद रखना है? सिर्फ इतना याद रखना है कि इसके जो अलग अलग पार्ट्स है, कौन से पार्ट का क्या फंक्शन है. हो सकता है क्वेश्चन आपको घुमा के दे. और ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है. हर साल ये बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन में आता है. या तो डायग्राम गिवन होता है, आपको लेबलिंग करना है और लेबल्ड पार्ट का फंक्शन बतानी है. किसी में 2 फंक्शन होता है और किसी में 1 फंक्शन होता है. तो जैसे कि मैंने अभी अलग अलग पार्ट्स के नाम बताया, टेस्टिस बताया, पेनिस, यूरेथ्रा, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, देन योर स्क्रोटम, वास डिफरेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और इनके फंक्शन भी मैंने बता दिया आपको इंग्लिश में. तो आपको इनके फंक्शंस को अच्छे से याद रखना है और डायग्राम को प्रैक्टिस करना है. कोई भी चीज़ इजी नहीं है जब तक हम उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे. ठीक है. तो ये वाला डायग्राम सिंपल डायग्राम है. यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स को दिखा रखा है. और ये टेस्टिस है, इसके अंदर स्पर्म फॉर्मेशन होती है. स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के दौरान हम पढ़ेंगे इसके बाद. फिर ये जो स्पर्म है कैरी होके जाता है वास डिफरेंस के थ्रू. देन वास डिफरेंस के थ्रू होते हुए यहाँ पे यूरेटर के साथ कनेक्ट होता है. फिर एक कॉमन डक्ट के थ्रू ये पास होता है कहाँ? यूरेथ्रा के पास. फिर ये यूरेथ्रल मीटस के थ्रू रिलीज हो जाता है. और पेनिस जो मैंने बताया था ये एक्सटर्नल जेनिटलिया है इन केस ऑफ ह्यूमन मेल, मींस एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन इन केस ऑफ ह्यूमन मेल. फिर मैंने बताया आपको कि जो टेस्टिस है वो बॉडी से बाहर होता है. क्यों होता है? क्योंकि टेस्टिस में जो स्पर्म फॉर्मेशन होती है, स्पर्म फॉर्मेशन होने के लिए उसको जितना हमारा बॉडी का टेम्परेचर है, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस से 2 से 3 डिग्री और कम टेम्परेचर चाहिए. तो ये वो रीजन है जिसकी वजह से टेस्टिस बॉडी के अंदर नहीं बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है. फिर टेस्टिस के चारों तरफ, मतलब टेस्टिस को एक स्किन पाउच, एक स्किन कवर करके रखा हुआ होता है. उस स्किन को स्क्रोटम बोलते हैं और यही स्क्रोटम है जो टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है. ठीक है. फिर बताया मैंने यहाँ पे सेमिनल वेसिकल. ये जो सेमिनल वेसिकल और ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये दोनों एक्चुअली ग्लैंड्स है. और ग्लैंड का काम आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है चैप्टर 2 के अंदर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर आपने पढ़ा है कि ग्लैंड का काम होता है सिक्रेट करना, चाहे वो एंजाइम सिक्रेट करे या फिर हार्मोन सिक्रेट करे. तो यहाँ पे जो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड है ये सिक्रेट कर रहे हैं एंजाइम्स और कुछ न्यूट्रिशनल फैक्टर्स. तो जो सेमिनल वेसिकल है, सेमिनल वेसिकल से सिक्रेशन होता है सेमिनल प्लाज्मा. इसका जो सिक्रेशन है उसका नाम है सेमिनल प्लाज्मा. और सेमिनल प्लाज्मा के अंदर होता है फ्रुक्टोज कैल्शियम. और ये फ्रुक्टोज कैल्शियम कुछ न्यूट्रिशनल, क्योंकि खुद अपने आप में न्यूट्रिएंट्स है, तो ये क्या करते हैं, जो स्पर्म है, स्पर्म लिविंग है, सिंगल सेल भले ही है पर उसको न्यूट्रिशन चाहिए. तो ये न्यूट्रिशन उनको कहाँ से मिलता है? फ्रुक्टोज एंड कैल्शियम से. फिर इसके बाद आता है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड. प्रोस्टेट ग्लैंड एक लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करता है. इसमें से जो सिक्रेशन होता है वो एक लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि जो स्पर्म टेस्टिस के अंदर बना था वो यूरेथ्रा के थ्रू इजीली पास हो. तो इसीलिए
जब दोनों का सिक्रेशन मिल जाता है। क्वेश्चन आपके लिए ऐसा आएगा, explain the role of seminal vesicle and prostate gland. You can write the seminal vesicle and prostate gland gives nutrition as well as liquid medium to the sperm for its easy movement. फिर यहाँ पे वास्ट डिफरेंस मैंने बता ही दिया है ऑलरेडी कि क्या काम है, और यूरेटर बता दिया। यहाँ पे ब्लैडर है जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है, और मेल के केस में यूरिन जिस डॉक्ट के थ्रू रिलीज होता है उसी डॉक्ट के थ्रू स्पर्म रिलीज होता है। ये वो रीजन है जिसकी वजह से मेल जेनाइटल ऑर्गन को क्या कहा जाता है, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। इट मीन्स बोथ द गैमेट as well as the urine released through the common duct। और लास्ट में मैंने ये बताया था कि ये यूरेथ्रल मेटस है, और ये यूरेथ्रल मेटस के थ्रू जो स्पर्म है वो बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है। तो ये जो था आपका ओवरऑल डिस्क्रिप्शन अबाउट द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, you have to watch this video again and again and should write. Here I have not write any points. So here after watching the video or while you are watching the video, you should point down or write down the points and the functions of different parts of the male reproductive system. So for today this is all about your topic.